So hello guys, and today we are gonna solve some questions on topology. Okay. So first let me just enlarge the screen so that you guys can read this question properly. Okay. So पहले देख लेते हैं first question में क्या दिया हुआ है. So let x be the set such that all the small x belongs to 0, 1 such that x equals to 1 by n and this should be x not equals to 1 by n. Okay, it's a printing mistake and it should be x not equals to 1 by n. N does belongs to n with subspace topology. ठीक है. Then there are certain options. X is connected but not compact. X is neither compact nor connected. X is compact and connected. X is compact but not connected. So basically here we are given with a set that is like this. X equals to this one. X belongs to 0, 1 and x is not equals to 1 by n such that n belongs to natural numbers. Okay. This is the set we're presented with. Now we can see that this set is disconnected. Okay, this set is disconnected at x equals to 1 half, 1/3, 1 by 4th, 1 by 5th, and dot. It's going on. Okay. So this set is disconnected at this point. Okay. Therefore, x cannot be connected. X is disconnected. You're getting my point. X is disconnected. Now, another thing also we can infer that it is not compact. Okay. This x is not even compact. X is not compact. And hence we get the answer option B, that this set is neither compact nor connected. Okay, हम लोग को क्या आंसर मिल जा रहा है इधर में कि x is neither compact nor connected होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख ले रहे हैं कि x इधर में डिस्कनेक्टेड है एट ऑल दिस पॉइंट. हेंस ये जो टोटल जो सेट हो रहा है x, इट इज डिस्कनेक्टेड एंड ये कॉम्पैक्ट भी नहीं हो रहा है. ओके. नाउ coming down to the second question, what it is given that we have certain subsets of Rn. Okay, Rn का कुछ subsets दिया हुआ है. We have to find out which one is compact. Okay, so in Rn, compact means closed and bounded. Okay, compact means closed and bounded. So we have to check which subsets are closed and bounded. Now notice instead of Rn we are given Rn. हम लोग क्या कर सकते हैं, n को 2 पकड़ लेते हैं. ओके, सो ये क्या होता है, R2 स्पेस हो गया, दैट इज आवर बेसिकली दिस वन. ओके, R2 प्लेन में आ गया ये वाला पोर्शन, एक्स वाई प्लेन जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, R2 प्लेन इधर में आ गया. And we are well used to this. Okay, we are well used with this and its topology, and so we can solve this question easily. Okay, so अगर ये R2 में आ गया है, so let's check each option. Okay, let me just change the color of my pen. So in the first case it is given xi is less than 1. So basically क्या दिया हुआ है इधर में, x1 is less than 1 and x2 modulus of x2 is less than 1, modulus of x1 is less than 1. Yeah, now this set is bounded. ये तो श्योर, हम लोग इसके ऊपर श्योर है कि ये बाउंडेड है, पर दिस इज नॉट क्लोज्ड. नॉट क्लोज्ड. ओके, ये क्लोज्ड नहीं है एंड हेंस फोर्थ this cannot be a compact set because we need closed and bounded. It is bounded but not closed. Okay, so one cannot be. Okay, let's check for 2. Now इधर में n तक तो है नहीं, हम लोग 2 ले रहे हैं, so this is turning out to be, this will turn out to be x1 plus x2 is equals to 0. Now what is this?
in the R2 space, what is this? This is the equation of a straight line. Equation of a straight line. Now, equation of a straight line. So, this is closed, but straight line क्या कभी bounded होता है? So, not bounded. And if it is closed and not bounded, hence हम लोग इधर से क्या infer कर पाएंगे? This is not compact. Okay, so ये reason भी गया. Now, third one, C. इधर में क्या होगा? That is x1 is greater than equals to 0 and this one, okay? x1 is greater than equals to 0, x2 is greater than equals to 0. Now, if we check this one, this is obviously closed, okay? This is closed. ये closed set है, but not bounded. This is not bounded, and hence this cannot be compact also. So last of all, we are left with only one option. So by option elimination, this is bounded. Sorry, this is compact. Okay, this is compact. Obviously bounded तो है ही, but to be honest, this is closed and bounded. हम लोग इसको अगर एक बार discuss भी कर लेंगे, you will get that it's writing to us that x1 is like this, greater than equals to 1 and less than equals to 2, and x2 is more than 1 but less than 2 square. What is 2 square? That is 4. Okay, so obviously ये जो सेट होगा ये बाउंडेड तो है ही, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लोअर बाउंड 1 हो रहा है, अपर बाउंड 2 हो रहा है, लोअर बाउंड 1 हो रहा है, अपर बाउंड 4 हो रहा है, सो इट इज बाउंडेड. एंड सेकेंडली हम लोग क्या नोटिस कर पा रहे हैं, ये क्लोज्ड भी होगा because it is containing all of its limit points and hence closed also. So bounded है, closed है, hence compact भी है. Now the third one. Okay, the third question. ये लिखा हुआ है इधर में, let E be a connected subset of R. Okay, let E be a connected subset of R. क्या लिखा हुआ है? Connected subset. Okay, with at least two elements. How many elements? Two elements. ठीक है, connected subset of R with two elements. Then the number of elements in E. E में फिर number of elements कितना होना चाहिए? Let me just shrink the size of the page for you. आप लोग और क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख ले पाओ जिससे. So इधर में क्या पूछ रहा है, जो ये एक कनेक्टेड सबसेट है जिधर में दो एलिमेंट्स है, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना होना चाहिए, राइट? नाउ लेट्स नोटिस दैट हम लोग को ये चीज पता है दैट एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर with more than one element is always, मैं ये वाला पोर्शन रेड में लिख दे रहा हूं, ओके, सो दैट आपको याद रहे, इज ऑलवेज अनकाउंटेबल. ओके, henceforth इधर से क्या डिफाइन हो जा रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज अनकाउंटेबल. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अगर कनेक्टेड सबसेट हो रहा है, ये वाला पॉइंट आप याद रखना, आई स्टार्ट इट. सो इफ एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर with more than element or has more than one element, okay, let me just erase with and write has, having more than one element is always uncountable. तो one से ज्यादा element होगा, so it's always uncountable ही होगा. Okay, so every connected subset of R having more than one element is always countable. Sorry, uncountable. Okay, it's always uncountable. So the correct option is uncountable. ठीक है. Now the last question of today is the subspace. We are talking about a subspace that is Q cross 101. Okay, Q cross 101. Let me write it down. Q
क्रॉस 0 1 ऑफ R2। ओके, ये हो गया आप लोग का सबस्पेस। नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है, इज दिस डेंस इन आर स्क्वायर, इज दिस डेंस इन आर स्क्वायर। सो इफ दिस सेट इज डेंस इन आर स्क्वायर, तो इसका क्लोजर क्या होना चाहिए? टू बी डेंस इन आर स्क्वायर it must have क्लोजर एज आर स्क्वायर। ओके, तभी ये डेंस हो पाएगा। बट इफ यू सी दिस, ये जो सेट है इसका एक्चुअली क्लोजर क्या है? इसका एक्चुअल क्लोजर होगा R क्रॉस 0 1। इसका एक्चुअल क्लोजर होगा R क्रॉस 0 1, विच इज नॉट आर स्क्वायर, एंड हेंस ये कभी डेंस नहीं है। ओके, नॉट डेंस इन आर स्क्वायर। So that's a wrong option. Okay, it's a wrong option. नेक्स्ट है कनेक्टेड। ओके, सो क्या ये कनेक्टेड कभी हो पाएगा? सो इसको अगर आप लोग सोचेंगे, द सबस्पेस, इसके बारे में अगर सोचेंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड कनेक्टेड होने के लिए क्या चाहिए और इसके पास क्या वो चीज होगा, क्यों पर ये ऑप्शन गलत होगा। It is not connected, and I tell you the reason ये connected इसलिए नहीं होगा। If you go by the reason ये connected क्यों नहीं होगा, because let me write it down for you guys, because there are many pairs of non-empty open sets। तो हम लोग को बहुत सारा ओपन सेट्स मिल जाएगा, नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स। ओके, नॉन एम्प्टी वाला ओपन सेट मिल जाएगा एक्स वाई, लेट मी कॉल दिस एक्स वाई, जिसको अगर हम लोग यूनियन करेंगे, सच दैट इफ वी टेक यूनियन ऑफ ऑल दो सेट्स, ठीक है, देन इट विल बी इक्वल्स टू क्यू क्रॉस 0 1। ओके, जिन लोग को हम लोग यूनियन करने से यू विल गेट क्यू क्रॉस 0 1, हेंस इट कैन नॉट बी कनेक्टेड। ओके, ये भी गलत हुआ। नाउ थर्ड वन, लेट मी राइट इट इन रेड कलर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग इज कॉम्पैक्टनेस, क्या ये कॉम्पैक्ट होगा? सो अगर आप लोग इसमें जाएंगे, क्वेश्चन को सही से देखेंगे, आर स्क्वायर में है। ओके, अभी मैंने न्यूली एक चीज कहा कि कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या जरूरत है, ये आपको रियल एनालिसिस में पता ही होगा कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड होने का जरूरी है, जरूरत होगा इससे क्लोज्ड एंड बाउंडेड होने के लिए। आप लोगों ने ये चीज रियल एनालिसिस में पढ़ा ही होगा कि टू बी अ कॉम्पैक्ट सेट इट हैज टू बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ओके, सो if we see this, the subspace q cross 0 1, so ये वाला जो सबस्पेस है, दिस इज नाइदर क्लोज्ड नॉर बाउंडेड, ना ही ये क्लोज्ड हो रहा है ना ही ये बाउंडेड है इन आर स्क्वायर, सो इट कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो ये जो सबस्पेस है, दिस इज नाइदर क्लोज्ड नॉर बाउंडेड in R square, so it cannot be compact. So ये भी option wrong है. So we are left with, again we are left with another option, and hence it can be separable. ठीक है, separable का और एक थोड़ा सा रीजन मैं इधर में लिख दे रहा हूँ नीचे, you can notice it। देखिए, basically Q क्रॉस, ये वाला पोर्शन सही से देख लेना, Q इंटरसेक्शन 0 1, ये जो मैंने सबस्पेस इधर में लिखा हो, ये सबस्पेस आप लोग पहले नोटिस कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टेकिंग क्यू इंटरसेक्शन 0 1, और इधर में दिस इज क्यू क्रॉस एंड विद दिस इंटरसेक्शन 1। ओके, सो दिस इज
काउंटेबल, एक पार्ट काउंटेबल, नेक्स्ट डेंस सबसेट, क्या लिखा, डेंस, ओके, दो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी, काउंटेबल एंड डेंस सबसेट ऑफ Q cross 0 1, okay, and so it is separable, and so it is, ये property है, so property wise this should be separable, okay, so hence it is separable, okay. So हो गया आपका चार क्वेश्चन. So we have done the question of the day. First one was about connectedness, compactness. Second one was about testing some subsets. Third one was about finding the number of elements in E, and fourth one was about this. Okay, we were talking about the subsets Q cross 0 1. Okay, so thank you for today guys. और भी नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे. ओके, चलो आज के लिए बाय बाय.